हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? सुनाई दे रहा है ना? Am I audible to everybody? Cool. So what was happening yesterday's class? In yesterday's class, I'm just waiting for your response. Maybe there is a delay with Zoho. Super, बढ़िया रिया. I'm happy you are doing great. जी बताइए, कल का क्लास कैसे, क्या क्या लिया था? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी फाइंडिंग बग्स. ओके. ओह, कल क्लास नहीं था. अच्छा. ओके फाइन. मैंने सोचा किसी ने लिया. ओके परफेक्ट. ओके, नो प्रॉब्लम. तो आप जो भी एप्लीकेशन मैंने फ्राइडे को दिया, आप एक्सप्लोर किया? बग्स, केसेस लिखा, कितना केसेस लिखा, कितना सिनारियोस एंड कितना बग्स? कोई दिखा सकता है मुझे? समवन कैन शो मी कि मैं इतना केसेस लिखा और इतना बग्स डाला? किसी ने भी? एनीबडी वांट्स टू स्क्रीन शेयर? क्या हुआ? कोई बात ही नहीं कर रहे हैं. बक्स लिया कि नहीं? क्या हुआ? कोई बक्स नहीं लिखा क्या? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस. कितना बक्स लिखा है आप? कोई एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग नहीं किया जो एप्लीकेशन ने दिया? कैन आई हैव एन आंसर प्लीज? रिया, वैभव, सोनिया, कुणाल, प्रियंका, एवरीबडी. Did you guys complete your scenarios, test cases, and bug report? Yes, no. No. Okay, very good.
ओके रिया, कितना केसेस लिखा आपने? गुड, एटलीस्ट समवन। बहुत बेसिक सा। ओके। ओके, तो एक्चुअली प्लीज कंटिन्यू दैट। कल कल हम उस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अब मुझे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग कंप्लीट करने दीजिए। ओके, लेट मी पिक सम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। हमें एक एक करके हम last 15-20 minutes we will see. I will leave that to do some exercise for you guys. Okay, all right. ओके, हम तो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पे है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। फंक्शनल में लेवल्स ऑफ टेस्टिंग देखा था, राइट? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन सिस्टम एंड यूएटी। तो इस तक क्लियर है? ओके, नाउ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में, ओके, is we call it as performance testing. Okay, performance testing के अंदर load testing, stress testing, scalability testing, stability testing. Able to see my screen? Okay, so first let us see what is load testing. Okay, performance के अंदर load testing क्या है? Can you guys help me to uh, what is load testing? Can you guys help me? Can you guys tell me how you are able to? लोड का मतलब क्या होता है? लोड टेस्टिंग का मतलब, टेस्टिंग को छोड़िए, लोड का मतलब क्या है? जब हम लोड बोलते हैं, लोड का मतलब क्या है? Time takes to load the information. Okay. Okay. Generally, load is your data load. Data load, or it can be any kind of load, right? Any type of load, any type of load it can be. The only thing is, when how do you do the load testing first? With terms of पहले first load, stress और a स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, इसे इसे पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे। ओके, अगर आपका लोड, अगर 8 आवर्स, ओके, आपको 8 आवर्स पढ़ा रहे हैं, ओके, और 8 आवर्स कुछ काम कर रहे हैं, एक, लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट 8 आवर्स। आपको अब सबको एक ग्लास दिया है, ओके, हाथ में ग्लास पकड़ने के लिए ग्लास दिया था, ओके, उस ग्लास में मैंने हाफ ग्लास पानी भरा दिया। ओके, मैंने हाफ ग्लास पानी भरा दिया और मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट हाथ में रखिए। what would be your thing? 2 minutes holding a half glass of water, is it fine? Okay, you should be good enough, right? अगर मैं बोल रहा हूँ 1 glass of water or a half glass of same half glass of water, you have to hold it for half an hour. What will happen? Will happen? What will happen to your performance? When I ask you to hold half glass of water for half an hour, what will be your thing?
It will pain. Yes. It will have, you will have your stress. You will say my hand is paining, right? So load, what is load? From load, how it is going for stress? Load testing is, there is every activity, okay, every activity what we do, there is a minimal load. Okay, we can have office hours 8 hours maximum. I can take from 10 hours sometimes, and that we call it as stress. अगर एक पर्सन रोज 8 hours के ज्यादा काम कर रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 12 hours 15 hours काम कर रहा है, तो स्लोली स्लोली क्या क्या होगा, उस पर्सन को स्ट्रेस होगा, राइट? किसी भी लोड एक्टिविटी अगर स्टेबल रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर हमको लोड को इंक्रीज करते जा रहे हैं और at a time everything is coming, then becomes the stress. Like, you're getting performance testing is first, load plus stress is equal to performance testing. Okay, can you guys give me an example in IT now? Where did you find this load and performance testing so irritated for you guys? Application के नाते, I'm sure you guys, everybody have experienced it. Where did you experience it? When did you experience the first time? अरे यार ये इतना स्लो है, क्या कर रहा है अभी तक एप्लीकेशन, इतना डिले क्यों हो रहा है? You would have told, right? What was that application? Let me see how many people are able to connect. Filling up the comment site. Okay, एक और चीज है, आई होप एवरीबडी विल एग्री। जब हमारा एग्जाम रिजल्ट्स अनाउंस हो रहा है, कैसा कैसा है साइट एक्चुअली? डू यू गाइस अंडरस्टैंड? एग्जाम व्हेन वी हैव द एग्जाम रिजल्ट्स कमिंग अप, जो भी नंबर दे के वो एंटर बटन दबा के वेट करेंगे, ओ माय गॉड कैसा रहेगा वो? बोर्ड एग्जाम्स वेबसाइट्स, या दैट इज व्हाट। हाउ डू यू फील? यू फील लाइक जो भी वेबसाइट बनाया पहाड़ में जाओ सब लोग, अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या जा रहा है, राइट? We will scold like anything, like what is this? I want to see my results, right? Yeah. So every application will have its own load limit. Okay, the moment you increase the number of users accessing the application, the number of requests in general, when you say for a web application, okay, we call it as, okay, we call it as request and response. Any application we call it as request and response. What is request and what is response? हम जब यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, ओके, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगर ये यूजर नेम पासवर्ड का जो भी डेटा रिलेटेड है उसे दिखा दो मुझे, राइट? That's the response from server. Request is from client, right? From the client system, we send the request. Response, send the request to server, right? Request to server. Response होगा from the server client system will send the appropriate information. You're getting it? What is client and what is server first?
क्लाइंट, जो भी हम यहाँ से काम कर रहे हैं, अब क्लाइंट मिशन क्या हो सकता है? gmail.com डाल रहे हैं, google.com डाल रहे हैं, वो क्लाइंट है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाल के एंटर किया, वो इंफॉर्मेशन और रिक्वेस्ट का इंफॉर्मेशन चलेगा सर्वर तक। सर्वर इज द बेसिक प्लेस जहाँ पे डेटा सब कुछ स्टोर होगा। ओके, तो वो उन सर्वर से वो वापस आके, ओके, दी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएंगे। तो एक लोड एंड स्ट्रेस का वी कैन डू मल्टीपल वेज। कैसे कर सकते हैं? लाइक लोड स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं? एक होगा नंबर ऑफ यूजर्स, राइट? नंबर ऑफ यूजर्स sitting the site at the same time, राइट? और क्या हो सकता है? What is the other ways of load and stress? Suddenly, the 100 people, 50 people accessing the same site, problem होगा। और क्या हो सकता है? What else? बताइए। What else? और क्या हो सकता है? लोड स्ट्रेसिंग और क्या क्या हो कर सकते हैं हम लोड में? एग्जाम्पल्स दीजिए। लोड टेस्टिंग में एग्जाम्पल्स दीजिए। एक है मल्टीपल यूजर्स, और इतना साइलेंट है आप लोग आज, क्या हुआ? ट्रांसफरिंग हैवी डेटा, वेरी गुड श्रेया, या वेरी गुड। डेटा रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइक सेम यूजर गिविंग मल्टीपल रिक्वेस्ट, और multiple users giving same request is also one kind of load and stress, right? Why do we need to do the performance testing now you guys are understanding, right? जो भी डेटा लोड होना चाहिए, जो भी हमको प्रॉपर से इंफॉर्मेशन यूजर को देखना चाहिए, वो टाइम पे फास्ट से आना है ना? अगर आपने मोबाइल स्विच ऑन किया, इट शुड ऑन फास्टर, राइट? यू कैन नॉट वेट फॉर द मोबाइल टू switch on for 30 minutes or 15 minutes or 10 minutes. 10 years back, the loading of data was totally different, and now the way the loading limit is different. The loading limit is different. Agree? Download large files, very good. Maximum data on the server, very good. Storage limit अगर प्रॉपर से सर्वर में नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? अब तो मोबाइल नेटवर्क्स आ गया, आप मोबाइल से ही कनेक्ट कर सकते हैं ज्यादा 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 देर तक, नो। अब पहले था डेटा कार्ड हम यूज करने से, उस समय तो डेटा कार्ड ऐसा था कि लाइक वी डोंट नो स्विच ऑन द डेटा, इट विल बी वेरी कॉस्टली। अब तो 1 GB पर डे, 2 GB पर डे भी बहुत बहुत आसान से निकल जाएगा, है ना? 2 GB is nothing in a day to use. Agree? Are you guys agreeing it? Internet 2 GB is nothing to use now. है कि नहीं? Come on, I want a very very active interactive session. I want everybody to respond. Low network, yeah, very good, but yeah,
आप लोग respond करना है. You need to type. You need to be active. Yes करके मुझे क्या, I mean, uh, you have to answer my question. So how much data you need per day? What is your internet speed? कितना देख रहे हैं हम लोग? What is your per day internet limit now? 1 GB to 2 GB, 1.5 GB. Very good. Yeah. So we are utilizing the speed of the network. Now comes the speed of the network, or क्या है, ओ स्केलेबिलिटी मैंने बोल रहा था ना, स्केलेबिलिटी में प्रोसेसर का स्पीड कैसा है, राइट? लोड एंड स्ट्रेस इज मोर ऑफ यूजर्स, सर्वर का स्पेस, लोड, डेटा ट्रांसफर्स इन ऑल दोस थिंग्स. स्केलेबिलिटी इज मोर रिलेटेड टू प्रोसेसर का, और हम जो इंटरनेट का स्पीड जो भी है, मोस्ट ऑफ द रिलेटेड टू दी the transferring stuffs, or the data related, not the data related but network related, और प्रोडक्ट सेव करने पे कितना टाइम लग रहा है, राइट? ये सब होगा स्केलेबिलिटी टेस्टिंग में. ओके. And when we do this scalability or whatever testing, we say one word. We need to find the, ओके, जब भी हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं ना, we used to say one thing. We need to find the bottleneck. Can you tell me what is bottleneck? We need to find the bottleneck point. We have load balancers. Performance testing is again one of the biggest scope in testing, where you have lot of things. Okay. Performance testing is also one of the very, very interesting thing. What is bottleneck? Yeah, you guys have to tell me what is bottleneck. Bottleneck point होता है, we need to understand where the system is breaking exactly. अगर 100 users में जब जा रहा है, system is not responding, system hang हो जा रहा है. This is what the maximum capacity the server can take the request and send the response. So you need to find out the bottle point. It has a limit. Every system, every server has its limit, right? जब हम प्रोसेसर खरीद रहे हैं, क्या बोलते हैं? सर, गो फॉर दी हायर एंड प्रोसेसर. सर, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में कितना रैम चाहिए आपको, राइट? कितना रैम, व्हाट प्रोसेसर स्पीड चाहिए, है ना? फास्ट फास्ट, मुझे जल्दी, बहुत अच्छा तरह मैं यहाँ पे सॉन्ग्स रखूंगा और वीडियो गेम पे प्ले करूंगा, और ना व्हाट्सएप में कॉल, सब कुछ इज रिलेटेड टू द बैटरी performance of the mobile. I'm just giving an example what we are using on our day-to-day life, right? Earlier, when we were getting into IT, or even our before generation, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना एक्सपोजर नहीं था. सो सर्वर, क्लाइंट और लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने में बहुत दिक्कत आ रहा था. पर अब लॉट ऑफ टूल्स हैव कम इन, and a lot of people are using devices. We have to be very, very accurate in giving that results. Nobody wants no system to be slow or hang ho ja raha hai, mobile ठीक से काम नहीं कर रहा है, performance issue आ रहा है. नहीं यार, ये when performance testing is not good for a product, what will happen? You will not purchase. Am I right? अगर एप्लीकेशन ठीक नहीं काम कर रहा है, मोबाइल का कुछ ऐप आप खरीद रहे हैं, नहीं मोबाइल ही खरीद रहे हैं, मोबाइल जल्दी जल्दी हैंग हो जा रहा है, डू यू परचेस इट? खरीदेंगे क्या आप? नहीं ना? So this performance testing is very, 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 very important. Now you have to tell me what are all the tools available in the market to do the performance testing.
You have to tell me what are all the tools are available in the market to do the performance testing. आप गूगल में ढूंढ करके मुझे बताइए, गूगल में ढूंढ के मुझे परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स क्या क्या है आप बताइए. आई वांट टू सी. चलिए, आपका मोबाइल या सिस्टम किसी पे एक्सेस कर रहे हैं आप. वेरी गुड, आ रहा है. या वेरी गुड. लोड रनर, अपाची JMeter. ओके, गुड. और क्या क्या टूल्स है? वेब लोड, न्यू लोड. वाओ, नाइस, वेरी गुड. रागिनी, नाइस. ओके. एपियम, रोबोटियम. ओके, रोबोटियम. ओके, वेब लोड, ब्लेजोमीटर. ओके, गुड गुड गुड. आप तो देख रहे हैं ना, इसमें एक्चुअली आपको IBM में भी कुछ टूल्स है, रैशनल टूल्स बोलते हैं हम. और अपिटो भी है, आप जाके अपिटो भी देख सकते हैं, वो भी एक परफॉर्मेंस टूल है. और बहुत सारा टूल्स अवेलेबल है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए. एंड एक एक टूल के लिए आपको आपको लैंग्वेज सीखना पड़ता है. सिल्क परफॉर्मर, वेरी गुड. IBM सिल्क परफॉर्मर, यस, दैट इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू. तो एक एक टूल का लैंग्वेज जरा डिफरेंट होता है. What is the language you need to learn for this each tool what you are typing? Now tell me, load runner कौन सा कौन सा लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा? अगर लोड रनर को सीखना है तो कौन सा लैंग्वेज यूज करना है? जावा. क्या क्या चाहिए? व्हाट इज द बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड टू लर्न द परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल? जो भी आपने इतना टूल्स बताया है, उसका बेसिक लैंग्वेज क्या होना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ, एग्जैक्टली. व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नीड टू लर्न? अगर आपको जो भी सिल्क परफॉर्मर बोल रहे हैं, लोड रनर बोल रहे हैं, व्हाट इज द लैंग्वेज? लोड UI. यस, जावा. सम टूल्स यूज जावा, अग्री. और ओके, तो आप क्या कीजिए, मुझे कल आप सब लोग बताना है मुझे. लोड रनर कौन सा टूल पढ़ने के लिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए? JMeter पढ़ने के लिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए? ऐसा आई नीड मिनिमम 4 to 5 टूल्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. ओके, मुझे बताना है आप कौन सा लैंग्वेज आपको सीखना होगा. पाइथन, वेरी गुड. ऐसा नहीं, टूल का नाम और कौन सा लैंग्वेज में वो टूल कोडिंग जनरेट करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखना है एक टेस्टर को, आपको बताना होगा मुझे. ओके, परफेक्ट. तो वी आर वेरी क्लियर. लोड, स्ट्रेस, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी टेस्टिंग का क्या क्या है, राइट? व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, आपको तो पता हो गई, राइट? Now let's go to the other types of testing. Other types of testing में स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है? पहले ये दोनों को कंप्लीट कर लेंगे. व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग एंड व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग? अदर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में बताइए, स्मोक टेस्टिंग क्या है, सैनिटी टेस्टिंग क्या है?
Come on. Let me see how many people are answering. स्मोक और सैनिटी क्या बताइए? कम ऑन। क्या हो रहा है आज? बहुत स्लो हो रहा है। अगर जोहो एप्लीकेशन स्लो है या आप लोग स्मोक टेस्टिंग इश्यूज? ओके। स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग दोनों का डिफरेंस क्या है? एप्लीकेशन स्लो है, ओके। Okay, smoke testing is doing no doing the majority of major functionality testing होता है smoke testing. Okay, sanity testing होता है sanity testing, और we can call it as BVT, build verification testing. ये क्या है ना, जब भी हमको न्यू बिल्ड मिलता है, डेवलपर से है, यहाँ पे है न्यू बिल्ड, न्यू वर्जन, राइट, जब भी मिलता है हम सैनिटी चेक करेंगे पहले, इंस्टॉलेशन ठीक हो रहा है कि नहीं, हाँ, बेसिक फंक्शनैलिटी काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब सैनिटी टेस्टिंग ठीक से होगा उसके बाद हम बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का केसेस बनाएंगे। सो एक सिनारियो जब हम लिखते हैं उस उसे क्लासिफाई करेंगे, ये बीवीटी टेस्टिंग है या बीएटी टेस्टिंग, इसे सैनिटी लाइक लॉग इन स्क्रीन हमको डेफिनेटली होना चाहिए, लॉग इन करने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले होना चाहिए, सबका जो भी फंक्शनलिटीज हम ऐड और जो भी हम एक्चुअली क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, क्रूड मेथड बोलते हैं हम। ओके, एक क्रूड मेथड ठीक से काम करना है। अगर क्रिएट ही ना हम कर नहीं पा रहे हैं, राइट, अगर देख ही नहीं पा रहे हैं, क्या फर्दर टेस्ट कर सकते हैं? क्रिएट होने के बाद वो वहां पे आना चाहिए, वो वहां पे आने के बाद ही हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी। अगर क्रिएट ही नहीं हो रहा है, व्यू ही नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस, यू कैन नॉट डू फर्दर टेस्टिंग। तो वी कॉल दैट बग एज, जब भी सैनिटी चेकिंग करने से जो भी केसेस फेल हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसे हम बोलते हैं शो स्टॉपर्स। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, शो स्टॉपर। We call that as showstopper because we are not able to do anything. वो showstopper बताते हैं। बग लाइफ साइकिल में this is very very important. We call it as showstoppers. Okay, सैनिटी टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग हो गए अब, फाइन। अब हम जाएंगे रिग्रेशन टेस्टिंग। नाउ टेल मी व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? रिग्रेशन टेस्टिंग क्या? रिग्रेशन टेस्टिंग रीटेस्ट एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। पहले रिग्रेशन टेस्टिंग सीखेंगे और उसके बाद रीटेस्ट। मैं वेट कर रहा हूँ, जरा स्लो ही है आज तो जो हो।
मेरा नेटवर्क या कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। ओके, रीटेस्टिंग का मतलब है जब भी एक बग फिक्स होके आपका जो भी बिल्ड आ रहा है, ओके, उस बिल्ड और हम रिग्रेशन करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। अगर जो भी बग फिक्स किया वो बग हम टेस्ट करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, है ना। रीटेस्ट करने के बाद वो क्लोज हो गए, जो भी वो बग डेवलपर ने क्लोज किया, वो डिपेंडेंसी फंक्शनैलिटीज जो भी है वो फंक्शनैलिटीज अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, शुड नॉट अफेक्ट, राइट। वो हम टेस्ट करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करके देखेंगे। अगर आपने एक बग डाला है, क्रिएट हो रहा है, व्यू नहीं हो रहा है, ओके, तो क्या हुआ, वो व्यू को फिक्स कर दिया, ओके, अब तो व्यू हो रहा है, क्रिएट काम नहीं कर रहा है, राइट। इट कैनॉट बी लाइक दैट, राइट। अरे यार, अब तो क्रिएट काम नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वी नीड टू मेक श्योर जो भी डिपेंडेंसी फंक्शनैलिटीज है, उस फंक्शनैलिटी के मुताबिक से जो भी फंक्शनैलिटीज डिपेंडेंसी है, उस फंक्शनैलिटी सारे को हम रिग्रेशन टेस्ट करेंगे टू मेक श्योर द फिक्स हैज नॉट अफेक्टेड द other functionality which was working fine. Okay, do you understand what I'm saying? आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए टेस्टर। आप समझ में आ रहा है आपको जो भी मैं बता रहा हूँ? आर वी क्लियर ऑन व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग? ओके, गुड, हैप्पी। ओके, no ma'am, okay, okay, Ria, good that you said no. Okay, regression testing, okay, let me say, let us take an example of email, okay। so आपने ईमेल में एक बग डाल रहे हैं, ओके, लेट अस इमेजिन यू आर वर्किंग फॉर गूगल, ओके रिया, let you are working for a Google and you are working on Gmail testing, okay। Gmail तो सबको पता है, Gmail ने आपके खोल दिया, आप जो भी कंपोज करके मेल सेंड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ओके, सेंड काम नहीं कर रहा है जब कुछ अटैचमेंट मैंने डाल दिया, ओके। जब भी मैं अटैचमेंट डाल रहा हूँ, सेंड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ओके। मे बी वी कैन से, ओके, जब भी मैं एक डॉट पीएनजी फाइल या इमेज को जब भी मैं इंसर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जब तब वो फंक्शनैलिटी काम नहीं, मैं सेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मगर प्लेन टेक्स्ट में जब मैं हमने मेल लिख के भेज रहा हूँ, जा रहा है, अटैचमेंट लाइक डॉक्यूमेंट, डॉक अटैचमेंट हो रहा है, और नो जिप फाइल्स हो रहा है, वो सब हो रहा है, पर जब भी मैं इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, तब मुझे वो मेल नहीं जा रहा है, ओके। दिस इज व्हाट योर बग इज। नाउ डेवलपर ने बोल दिया हाँ ओके, मैंने फिक्स कर लिया, आप टेस्ट कीजिए। आपने जाके वो इंसर्ट कर लिया, आपने वो इमेज को, और सेंड करने के लिए कोशिश किया, और मेल भी चला गया, ओके। नाउ दिस बग इज फाइन, राइट। ये बग जो भी रेस किया वो तो काम कर रही है, ओके, आपने क्लोज कर दिया। मगर क्या हुआ, अब कंपोज करके प्लेन टेक्स्ट तो जा रहा है, पर जो भी हमने अटैचमेंट्स कर रहे हैं, जिप फाइल या वर्ड डॉक्यूमेंट, वो फंक्शनलिटी ठीक से अगर काम नहीं कर रहा है, रिग्रेशन टेस्टिंग में वो फेल हो रहा है, अगर लाइक बिकॉज ए बग फिक्स करके वो दूसरा नया बग लेके आ गया जो भी ठीक से काम कर रहा था, राइट। दैट शुड नॉट हैपन। सो वी हैव टू एंश्योर जो भी टेस्ट करके क्लोज किया, जो भी फंक्शनलिटी है, वो सब कुछ ठीक से जाना है, बिकॉज ये बग फिक्स करके दूसरा बग वो इन्वेंट नहीं करना चाहिए। सो वी कॉल दैट as regression testing cases to ensure all the functionalities are working as expected, and it does not affected the bug has not affected, the bug fix has not affected the previous functionalities which were working fine. Now are you clear, Ria and whoever has not understood जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया?
नाउ क्लियर है रिग्रेशन टेस्टिंग क्यों करना है, कितना जरूरी है. वेरी गुड. ओके परफेक्ट. गुड. बिकॉज रिग्रेशन टेस्टिंग रीटेस्टिंग ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके. नाउ I want, I'm not going to talk further on types of testing now. मगर मुझे आप लोगों को ये जो 10 मिनट है, उस 10 मिनट आपको मैं एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूँ. आई वॉन्ट यू गाइस टू राइट द टेस्ट केसेस. जो भी मैंने एप्लीकेशन दिया है मुझे, वो एप्लीकेशन प्लीज आप सिनेरियोस इतना लिखेंगे, इतना इतना लिखेंगे तो उतना आपका ही एक्चुअली इट्स गुड फॉर यू. आपका ही काम आएगा फ्यूचर के लिए. आपका जो भी लिखने के लिए दिक्कत है ना, वो चली जाएगी. कितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको परफेक्शन आएगा. और मुझे रिव्यू करने के लिए भी आप देंगे तो वो भी बढ़िया है. राइट. तो 10 मिनट केसेस लिखेंगे, सिनेरियो केसेस, बग रिपोर्ट बनाएंगे. एवरीबडी आर वी रेडी? यस. जो भी 10 मिनट है, 10-15 मिनट है. श्योर. हाँ बोलिए. मैं तो एग्जाम रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो एप्लीकेशन दिया हूँ, उस एप्लीकेशन के नाते आप लोग को काम करना है. आर वी रेडी? कैन आई हैव अ बिग यस? प्रैक्टिकल सेशन तो बढ़िया होना चाहिए ना. थियरी तो ऐसा ही हो जाएगा, बट प्रैक्टिकल्स प्रॉपर नहीं है तो जो भी आपने थियरेटिकली पढ़ा वो आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो डजंट वर्क, डजंट हेल्प एनीबडी. ओके. रिया ने मुझे भेजा है. वेरी गुड रिया. आई एम क्लिकिंग ऑन योर लिंक. ओके रिया, आई थिंक आई कैन नॉट एक्सेस योर्स. नो इट इज नॉट अलाउइंग मी. आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन यूजर आईडी पासवर्ड वो सब है आपके पास? एवरीबडी, do you guys have that application? Here is the application. admin यूजर आईडी पासवर्ड है. रिया मुझे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं. रिया आप डॉक्यूमेंट ही भेजिए, और डॉक्यूमेंट भेजिए आप. इस एप्लीकेशन को सब लोग एक्सप्लोर करना है. एक्चुअली एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड अंदर उसके अंदर जाने के बाद आप सिनारियोस लिखना है, केसेस लिखना है और बग रिपोर्ट बनाना है. I'm giving you this 15 minutes. People whoever has not even started और जो भी सब लोग आपके पास मैंने जो भी टेम्पलेट बनाया वो तो है ना. सो प्लीज ओपन करके this 15 minutes spend time on that. नहीं रिया, ये तो मुझे एक्चुअली अलो नहीं कर रहा है. एक्चुअली प्राइवेसी एरर दिखा रहा है. आई कांट एक्सेस लाइक दिस. सिस्टम डजंट लो. आप एक काम करते हैं. 1 सेकेंड. कार्तिक. सो कल आप लोग डॉक्यूमेंट रेडी रखिए. मैं ड्राइव में डालने के लिए बोलूंगा, उसके बाद ड्राइव में डालिए और मैं रिव्यू करके बताऊंगा, so that it will be helpful for you guys. Okay. आपने अलो कर दिया, बट मुझे तो प्राइवेसी इश्यू, प्राइवेसी एरर आ रहा है. मैं भी बिकॉज मैं ऑफिस लैपटॉप से काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा सिस्टम नहीं अलो कर रहा है. बट दैट्स ओके. So I'm leaving this 15 minutes for you guys to
और हैव द डॉक्यूमेंट रेडी। एंड एक और एक्सरसाइज है, आपको मुझे परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल का नाम और कौन सा लैंग्वेज है बताना है। और एक और चीज, रिग्रेशन टेस्टिंग टूल्स, फंक्शनल रिग्रेशन टेस्टिंग टूल्स क्या क्या है वो भी मुझे लिस्ट चाहिए। ओके, कल का क्लास हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, கார்த்திக் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸசைஸ் இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன்.